RSS role is character building. RSS role is nation building. So they train the Swayamsevaks to do duty. I mean in the government. No, they don't do anything in the government. They don't do anything in the government. Even, see, it's a very typical organization. Communist Party has their labor wing. Communist Party has their student wing. Communist Party has their other wings. So they are all party affiliates. That's not what RSS. RSS is an inspiration. It gives ideology, it gives character building, and you work built upon it independently. We don't interfere in BMS. ABVP doesn't interfere in BJP. RSS doesn't interfere in anybody, any of the organizations. Never. Because then it would not have survived till this moment. Hundreds of organizations coming out of that same ideology are working independently, but we are all ideologically connected. And that's the beautiful relationship. So we are friends, so we are partners in progress, partners in mission. Do you also take guidance from RSS from time to time? No, everybody has to go to RSS, those who like. We have many members who are not RSS men. So BJP is open, it is not restricted to only RSS. But people, even Congress people and many other party leaders, their sons also, their children go to RSS Shakha. So that's a good thing. RSS, that is, we must understand the RSS functioning. RSS, जैसे मैंने कहा, एक देशभक्ति की पाठशाला है. न इसमें मज़हब है, न जाति है, न अमीर गरीबी है, न कुछ है. सबको देशभक्ति सिखाने का काम आरएसएस करती है. और देशभक्ति के प्रेरणा से ओतप्रोत लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से अच्छा काम करेंगे. उसके लिए कोई आदेश नहीं देता, वो इनबिल्ट होता है. दैट्स अ सिस्टम यू आर. जैसे हम एक समझो एक मिलिट्री में जाता है तो एक डिसिप्लिन उसमें भरी जाता है, तो वैसे है वो. जर्नलिज्म है तो उसमें अवेयरनेस बढ़ता ही है. जो होल डायमेंशन 360 डिग्रीज देखने का है तरीका, तजुर्बा, वो मीडिया में होता है. मैं पत्रकार नगर में मेरा सारा 20 साल में रहा, तो पत्रकारों के सभी नेक्स्ट जनरेशन, कोई पत्रकार नहीं होता है, लेकिन उसमें एक होता है कि उसमें बहुश्रुतता जिसे कहते हैं वो आती है. तो एवरी प्रोफेशन उसकी एक विशेषता है. वैसे आरएसएस से एक नया आयाम मिलता है, आप सही विचार करने लगते हो. बस दैट्स ऑल. दैट्स व्हाट.